MCQz number 251. Success in developing values is mainly development upon teacher. Success in developing values is mainly dependent upon किस पे डिपेंड कर रही होती, तो वो टीचर पे डिपेंड कर रही होती. 252. How does an effective teacher make students attentive in class? किस तरह से एक टीचर जो है क्लास को अटेंटिव बनाता है? By making one's teaching interesting. अपनी टीचिंग को इंटरेस्टिंग बना के कि वो अच्छे अंदाज इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई के बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं. MCQ नंबर 253. कॉन्फ्रेंसेस आर फेस टू फेस डिस्कशंस. कॉन्फ्रेंसेस क्या होती हैं? बेसिकली डिस्कशंस होती हैं. फेस टू फेस डिस्कशंस को कॉन्फ्रेंसेस कहते हैं. MCQ 254. A written work by a student to demonstrate some literary or linguistic knowledge is termed as composition. Option C. 255. When the teacher checks the student's work using multiple sources of information, then this task is called cross-checking task. When a learner is learning to satisfy his needs and wants, he is actually doing experiential learning या experiential learning भी कह सकते हैं इसको, जब जो है कोई स्टूडेंट जो है सिर्फ अपनी ख्वाहिश या नीड्स की वजह से लर्न कर रहा. MCQ 257. In a dash, students formally present material then respond to questions from the audience. Symposium के अंदर जो है वो स्टूडेंट फॉर्मली जो है प्रेजेंट करता है मटेरियल और देन रिस्पॉन्ड करता है उनके क्वेश्चंस को, जो कि ऑडियंस उससे क्वेश्चन कर रहे होते हैं ऑडियंस. 258. All the verbal and non-verbal communications between teachers and students are called signals. वर्बल हो या नॉन वर्बल्स हो, उन सारी कम्युनिकेशंस को हम क्या कहते हैं? सिग्नल्स कहते हैं. 259. An old but effective teaching strategies. ओल्ड या इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी कौन सी है? रीड अलाउड. 260. Dash is a method where the students ask questions each other during presentations. कौन सा मेथड है जिसमें जो है स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन के दौरान एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं? दिस इज कॉल्ड peer questioning. 261. The most important duty of a teacher to complete the syllabus is the main duty of teacher. 262. If students do not understand what is taught in the class, the teacher should check up the previous knowledge of the students in the topic. Next MCQs. Which of the following is not related to educational achievement? एजुकेशनल अचीवमेंट में कौन सी चीज़ नहीं आती? तो हेरिडिटी नहीं आती, विरासत नहीं आती उसमें. MCQs 264. Interactive phase is likely to fail if diagnostic phase is defective. अगर diagnostic phase में कोई जो है डिफेक्ट आ गया है, या फिर जो है इंटरैक्टिव फेज इज़ नॉट प्रॉपरली एक्टिवेटेड. इन दोनों को अगर ये दोनों अच्छी तरह वर्क नहीं कर रहे, उनमें कोई डिफेक्ट है, तो इंटरैक्टिव फेज इज लाइकली टू फेल. 265. रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द डैश ऑफ एन असेसमेंट. जो किसी असेसमेंट की रिलायबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है. 266. द अफेक्टिव डोमेन इन्वॉल्व्स मैनर. अफेक्टिव डोमेन में क्या आते हैं? मैनर्स आते हैं. 267. What was the relation between the Socrates and Plato? So Plato was student of Socrates. Plato जो है Socrates के student थे. In direct instruction method or lecture method, the teacher is considered as formal authority. डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन या लेक्चर मेथड जिसे कहते हैं, उसमें टीचर को क्या होता है? फॉर्मल अथॉरिटी होती है, या उसे फॉर्मल अथॉरिटी के तौर पे कंसीडर किया जाता है. 269. An assessment is dash if it consistently achieves the same results with the same or similar students. Reliable है कि अगर सेम स्टूडेंट्स और सेम सिचुएशन में जो है उसके जो है वो सेम रिजल्ट्स दे रही है, तो वो क्या है? रिलायबल है. 260. As pupil gets older, the ability of applying or maintain attention decreases. Old ages के साथ ये attention या ability to thinking or learning is decreased. According to the dash, the more you do something, the better you are at it. जितना आप किसी चीज़ को ज़्यादा करते हैं उतना आप उसमें अच्छे हो जाते हैं. तो ये क्या कहता है? लॉ ऑफ एक्सपीरियंस ये जो है स्टेट कर रहा है. 262.
The advocates of philosophy of pragmatism believe that reality is constantly changing. Pragmatism जो है वो कहती है कि constantly जो है वो चीज़ें change हो रही है, reality constantly change हो रही है. 263 A popular teacher is one who is favorite of children, जो कि children का favorite है. Next MCQz है 264 The famous book The Republic was written by Republic किसने लिखी है? तो वो प्लेटो ने लिखी है. Republic was the book of Plato. Next MCQz An assessment that is conducted prior to the start of the teaching or instruction is called initial assessment. 266 The models based on the philosophy that learning occurs when there are changes in the mental structure are called cognitive learning models. Rather than telling, teacher leads students to concept through a series of ordered questions in Socratic method में. Next MCQ 268 Which from the following is termed as a student-centered learning method? Student-centered learning method कौन सा है इसमें? सेकंड और थर्ड वाला है, तो सेकंड और थर्ड वाला है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग. 269 The Waldorf education approach emphasizes a balanced development of head, heart and hands. 3H से कहते हैं. The extinction technique of classroom management is technique where teacher dash any negative behavior, where teacher ignores any negative behavior. इसको extinction technique कहते हैं. In co-education you deal according to the needs के मुताबिक आप जो है वो डील कर रहे होते हैं स्टूडेंट के साथ. 272 When taking a project you would plan it very carefully and see that there is no chance of failure. जब आप कोई प्लान या प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई फेलवर के चांसेस तो नहीं हैं. 273 A common technique to help people begin the creative process is brainstorming. Brainstorming जो है वो common technique है people को creative process में involve करने के लिए. MCQs number 274 dash An assessment is one which measures what is intended to measure. A valid assessment जो है वो भी बताती है कि क्या चीज़ करनी है, जब कोई which measures what is intended to measure, कि क्या चीज़ हमने measure करनी है, ये चीज़ बताती है valid assessment. According to John Dewey, educational process has two sides. जॉन डेवी के मुताबिक एजुकेशनल प्रोसेस की दो साइड्स हैं. कौन कौन सी हैं वो? साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल. ये जॉन डेवी के मुताबिक हैं. 276 एपिस्टेमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी कंसर्न विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज. एपिस्टेमोलॉजी है जो है वो नॉलेज की स्टडी को कहते हैं. 277 द सिंपलेस्ट स्किल इन कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज remembering. Remembering is the simplest technique or simplest skill of the Bloom's taxonomy. You are a famous teacher but students are not satisfied with your teaching style. How you will teach them will make harmony with student style. Student style के मुताबिक खुद को adopt करें. 279 When the teacher forms different groups among the students that take turns asking other groups questions, the strategy she is using is the cooperative review. ये cooperative review होगा. 280 The cooperative learning method which combines whole class learning plus heterogeneous small groups is termed as circles of learning. Option A. 281 One-on-one approach to teaching or reteaching concepts is termed as tutoring. 280 Dash is a student-generated list of words maintained by the students to remind them of words they need more work on. Spelling notebook. When the teacher displays picture for a second or two, then ask students to describe as much as they can remember from what they saw or she is trying to improve. This is visual memory of the students. This is to improve the visual memory of students. According to John Locke, a child's mind does not contain any innate ideas. Child mind कोई भी innate ideas उसमें नहीं होते. 285 The dash says we are motivated to gain rewards and avoid punishments. The law of effect कहता है.
286, according to the philosophy of idealism in education, the subject matter of curriculum should be mind. Option D. 287, according to the theory of forms or theory of ideas, material world is an dash of the real world, is an image of the real world. Option B. 288, the skill when students try to build abstract knowledge is called characterizing. Option B. 289, the academy was founded in एथेंस, एथेंस जिसे हम ग्रीस कैपिटल कहते हैं, एथेंस, वहाँ पे जो है एकेडमी बनाई गई थी. 290, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, virtue is dash state between excess and deficiency. Virtue as an intermediate situation between excess and deficiency. Option B, intermediate. 291, the process of selecting units from a population to estimate characteristics of the population is called sampling. Option D. 292, an aspect of pragmatism is experiential learning, which says education should come through experience. Education come through experience. Experience से आनी चाहिए education. The use of physical punishment for class management is called, क्लास मैनेजमेंट के लिए पुनिशमेंट जो यूज़ करते हैं उसको कॉर्पोरल पुनिशमेंट कहते हैं, कॉर्पोरल पुनिशमेंट. एन असेसमेंट दैट इज़ कैरिड आउट थ्रू द कोर्स इज कॉल्ड, जो कोर्स के थ्रू असेसमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं. ऑप्शन सी. 295, इन जॉन डेविस स्टूडेंट सेंटर अप्रोच ऑफ लर्निंग द रोल ऑफ द टीचर इज़ ऑफ डैश. टीचर का जो रोल है वो फैसिलिटेटर के तौर पे होता है स्टूडेंट सेंटर अप्रोच में. 296, which of the following is the social characteristics of a child. social characteristic of a child में ये सारी चीज़ें आती हैं. ऑप्शन डी, all of the above. which one is not among the elements of active learning. language नहीं है active learning के elements में. 298, which of these skills do you consider extremely important for a teacher. teaching skills जो है किसी भी टीचर के लिए important skills होती हैं. 299, Anila is 8 years old girl. She does not like to study. You as a teacher, क्या करेंगे आप as a teacher? Describe the benefits of study. उसे study के benefits बताएं. MCQz number 300. The instructional approach in which objectives are presented to learners in chronological order is known as a chronological sequencing. इसे chronological sequencing कहते हैं. Option A.